memory जो है that will be victorious this time, and we will not be seeing too many cases or too many problems or complications at that. At the same time, I want all of you to be very, very careful about the red flags that we do need to be aware of, because ye jo red flags hain, ye there are very few patients who might develop these problems. And our aim is कि ऐसा एक भी सर जैसे कहते थे ना कोई बिके ना कोई मरे, so that is the aim that we have, and I want that all of you should be very, very aware of when things can go wrong, when things are taking a wrong turn. You should be absolutely aware, and you should be absolutely in charge of the situation. So post covid होने के बाद में क्या क्या चीजों का हमें खास ध्यान रखना है, not during covid. If you wish, we can take a red flag for covid itself, but as of now we are taking this session today in the post covid period. हमें किन बातों का ध्यान रखना है, covid हो गया है 10 दिन 15 दिन 42 दिन तक किस बातों का हमें ध्यान रखना है. So this is the topic for the day. Without much delay, I would request Ranjana ji to please come forward and conduct the morning prayer. And नमस्कार मीनाक्षी मैम, थैंक यू मीनाक्षी मैम। आज दिनांक 22 अप्रैल 2022 बैसाख माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। और सर्वप्रथम मैं स्वस्थ गुरु डॉक्टर के अग्रवाल जी को सादर नमन करती हूँ। तदुपरांत SCFI टीम के सभी सदस्यों को सादर से स्नेह नमस्कार करती हूँ। ईश्वरीय महिमा की स्तुति में आज की स्तुति इस प्रकार है। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता, के हर पल बनिया रहे, के हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरणां मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनूठा है। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनूठा है। तेरे वचना ते जो चलदा ओ रहिंदा सौखा है। तेरे वचना ते जो चलदा ओ रहिंदा सौखा है। सपने च ना डोले मेरा विश्वास दाता, सपने च ना डोले मेरा विश्वास दाता। तेरे चरणां च एयो अरदास दाता। इस दाती ते दाता एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरणां विच ला लेना। मैनू अपना बना लेना, चरणां विच ला लेना। मैं तेरी हो जावां दाता, तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता, के हर पल बनिया रहे तेरा विश्वास दाता, तेरा विश्वास दाता। थैंक यू मीनाक्षी मैम। ओवर टू मीनाक्षी मैम। thank you Ranjana ji for that beautiful prayer this morning. So we'll start off with our show, and we'll talk about the panic buttons. So I'm just going to sort of talk about the respiratory, cardiac, and neurological red flags that we can have. The slides that I'm showing today, you may have seen them before, but it is very important that ये कुछ slides ऐसी हैं जो अगर हम in fact like the management has told me that हमें हर महीने भी अगर हम इनको दिखाएं तो that would be good, because at least if we have one new viewer who's learning something, then that would be good. So just stay with me and let's discuss the post covid red flags. covid होने के बाद में कितने दिन तक हमें ध्यान और सावधानी बरतनी है, and the answer is 42 days. It is my firm belief that हमारी बॉडी में हीलिंग होने के लिए
6 हफ्ते लगते हैं. 6 into 7 is 42. 6 weeks for most of the wounds that we have. ये समय होता है ठीक करने का. ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने का समय ये होता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. एंड 42 दिन तक हमें खास ध्यान हमें रखना चाहिए. बट विच मीन्स दैट 42 दिन तक हमें ज्यादा एक्सरसाइज एक्सर्शन हमें नहीं करना चाहिए. हमें 42 दिन तक वी शुड नॉट बी वी कैन if possible we should avoid traveling for long hours. Because क्या है लंबे समय तक ट्रैवल करने से हमारा जो थ्रोम्बे माइक्रो थ्रोम्बाई है जो बनते हैं in COVID, that may cause some problems. So these are the few things that you need to be careful about in uh, in the post COVID period. So usually 14 दिन में recovery हो जाती है. In fact, now since the past wave, we have also seen people recovering within 4 days. 4 दिन में भी हम recovery देख रहे हैं. तो जब भी हमारी recovery होती है, अगर recovery हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया कि your doctor that you are free from COVID, you have recovered, आपकी जो current acute illness है वो खत्म हो गई है. उसके बाद आज जो मैं सिम्टम्स दिखाने जा रही हूँ उसमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं then you need to speak to your doctor immediately. So these are the things that you need to be very very careful about. Number 1 is high grade fever. High grade fever मतलब 101. So one thing I must tell you is that you should have a thermometer at home to measure your temperature. खाली बोलना कि मुझे बुखार हो रहा है या मेरा शरीर गर्म हो रहा है, that is not enough. Because अगर बुखार 99 या 100 है in the post COVID period, that is absolutely understandable. But if your fever is 101 degrees or more, then this means that you have either a secondary infection या फिर आपका कोई pneumonia है जो COVID pneumonia है that has increased. So this is something that you need to be very careful about. बुखार अगर है, documented बुखार होना चाहिए, थर्मामीटर में बुखार चेक करना चाहिए. 101 से ऊपर होने से आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करना चाहिए. You might need antibiotics or you might need some investigation to rule out a COVID pneumonia. So this is what I want you to be very careful about. This is after recovery. If you have high grade fever, please speak to your doctor. Sudden occurrence of breathlessness. अचानक से सांस फूलना, बहुत ज्यादा तेज छाती में दर्द होना, सांस छाती का जकड़न, छाती में जकड़न सी फीलिंग आना, इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, then you need to be talking to your doctor. Now the key word here is sudden. Now after COVID, even those patients who have not developed pneumonia, they are somehow complaining of breathlessness. So ये एक बहुत common finding है कि एक absolutely fit person is complaining of not being able to take one flight of stairs. सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे because of breathlessness. तो breathlessness अगर continuous रहते रह रही है, that is fine. But एक अचानक से बहुत ज्यादा सांस फूलना, you might be headed for heart failure, so or some other complications. So please do talk to your doctor immediately. This is a red flag, which means जब हम red flag कहते हैं इसका मतलब ये एक emergency है. Rush to your doctor. Drop in oxygen. So this is a new addition, a new slide here in this particular PowerPoint presentation. I'm very surprised at myself that how did I miss this? So अगर आप desaturate कर रहे हैं, मतलब आपकी जो oxygen levels हैं ये कम हो रही हैं in the post COVID period, this is a absolute red flag. ये आपको कुछ ना कुछ problems आपको आ रही हैं, either related to your heart या फिर related to your lungs, and you need to speak to your doctor immediately. So a drop in oxygen after the recovery period is absolutely imperative. It is imperative that you need to speak to your doctor. But this has to be properly documented, right? क्योंकि अगर आपको ऑक्सीजन गिर रहा है, आपने अपने जो ऑक्सीमीटर है उसमें आपने चेक किया है एंड बहुत समय बाद आपने ऑक्सीमीटर को आपने ऑन किया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द बैटरीज माइट आल्सो बी डाउन. सो ये आपको अच्छे से इसको चेक करना है. Make sure that the oximeter is working properly. Make sure you don't have nail paint on. Make sure that आप 6-minute walk test का हम एक हमारे पास डेटा है, and then you can report to your doctor. But drop in oxygen is very serious. You need to speak to your doctor immediately.
इसके बाद में साइंस ऑफ क्लॉटिंग. सो इज अ कोविड इज अ थ्रोम्बोजेनिक स्टेट, व्हिच मींस दैट माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्म होते हैं आपके शरीर में, एंड माइक्रो क्लॉट्स आपके शरीर में होते हैं, एंड दिस माइट लीड टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. वी विल डिस्कस कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो एक तो हमारे छाती में, सो वी कैन बी हेडेड फॉर अ हार्ट अटैक, देयर कैन बी अ coronary artery blockage because of these thrombi. तो जो थ्रोम्बॉय होते हैं ना, वो छोटे छोटे, इन कोविड खासियत ये होती है कि छोटे छोटे क्लॉट्स फॉर्म होते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे क्लॉट्स है अलोंग द वे ये बड़े हो सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट. आपको छाती में अगर अचानक से दर्द हो रहा है, आप ये देखिए ये जो पेशेंट्स बैठे हुए हैं, इन्होंने कैसे अपने छाती को पकड़ रखा है, छाती में बहुत तेज दर्द होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी अ लिटिल वरिड अबाउट. सो ये अगर आपको हो रहा है, या फिर आपके लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है, जॉ में दर्द हो रहा है, आपको अचानक से यू आर हैविंग दिस लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, then you need to speak to your doctor immediately. This is what one of the complications of clotting can be, and इसका आपको खास ध्यान रखना है. सो पेन. अच्छा, इसके साथ में अगर आपको स्वेटिंग भी हो रही है, आपकी हार्ट रेट में कहीं चेंज आया है, बीपी आपका गिर रहा है, जॉ में पेन आ रहा है, दीज आर द फ्यू सिम्पटम्स दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट, एंड यू नीड टू सॉर्ट ऑफ बी वेरी केयरफुल अबाउट. अनयूजुअल अनबेरेबल हेडेक. ये कब होता है? देयर कैन बी योर बहुत ज्यादा आपका बीपी बढ़ गया हो, बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम हैज बीन ट्रिगर्ड, या फिर आपको कोई सर में कोई एक जो क्लॉट है वो जाके आपके कोई ब्रेन की आर्टरीज में आपको परेशान कर रही हो, या ब्रेन की जो कवरिंग है उसके बाहर में कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं जिसका कुछ ऐसा रिएक्शन आ गया हो, विच बिकॉज ऑफ विच यू आर आपकी कोई एक, सो इट कैन ईदर बी अ हेमरेज और इट कैन बी अ क्लॉट. यू नीड टू स्पीक योर डॉक्टर. अगर एक अनयूजुअल, मतलब आपको ऐसा सर में दर्द कभी भी नहीं हुआ, अनबेरेबल, आप बिल्कुल भी बैठ भी नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू get over that feeling of the headache, then this is something that your doctor needs to know about. This may be one of the signs of a stroke, so you need to speak to your doctor immediately. So ये एक neurological sign है. Blurred vision, again जो आंखों की arteries है उसमें कोई छोटा सा clot जाके बैठ गया, and वो एक ऐसी critical जगह में जाके बैठ गया, you're having blurred vision because of that. This is also a sign of clotting, and this is a sign that you need to speak to your doctor about. तो आपको ये जैसे दिख रही है, ये फोटो आपको थोड़ी धुंधली दिख रही है, एंड इफ यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड यू लुक अप, यू कैन सी दैट एवरीथिंग एल्स इज शार्प. हर एक चीज की जो शेप है, आकार है, वो आपको अच्छे से दिख रहा है. अगर ऐसा है, देन दैट मीन्स दैट आपको ये योर विजन इज एब्सोल्युटली फाइन. बट जैसी ये पिक्चर दिख रही है, कभी भी अगर आपको अचानक से ऐसी पिक्चर आपको चारों तरफ दिखे, इसका मतलब आपको ब्लर्ड विजन आपको है, एंड दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड दिस नीड्स टू बी रश्ड टू द इमरजेंसी इमीडिएटली. एक की जगह दो दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है दो सुपर इम्पोज इमेजेस यहाँ दिख रहे हैं, ये दो बच्चे आपको दिख रहे हैं, एंड ये इसको बोलते हैं डबल विजन. आपको कितना आपको कभी दो या दो दो दिखे अगर, तो दिस इज what needs to be taken care of immediately. So this is another thing that you need to be careful about. अगर आपको ऐसा कभी भी हो, that means that there might be a clot or there might be some problem in the arteries in your brain, or maybe something related to the retinal arteries, and you need to speak to your doctor immediately. ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, एंड ये बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है. इनफैक्ट ऑल द स्लाइड्स दैट वी हैव पुट अप टुडे, दीज आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट, एंड यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट. सो ये देखिए, लेग पेन, एक ही टांग में सूजन आना, एक ही टांग में बहुत तेज दर्द आना, एक ही टांग में बहुत लाली रहना, एंड बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहना इन वन लेग ओनली. इस लेग की एक आर्टरी में एक क्लॉट जो है वो जाके फंस किया है, एंड जो वीनस फ्लो है वो हैम्पर हो गया है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज दिस स्वेलिंग, दैट इज व्हाई देयर इज दिस रेडनेस, एंड दैट इज व्हाई देयर इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन. सो ये अनमिस्टेकेबल पेन होता है, एंड यू कैन स्पीक टू, एंड ये जो स्वेलिंग है ये बहुत जल्दी आती है, ये धीरे धीरे डेवलप नहीं होती. सो दिस इज समथिंग दैट अगेन आपको, दिस इज
it's almost like a peripheral vascular disease, and ये आपको या फिर एक deep vein thrombosis भी आपको हो सकती है, which means that आपके जो veins हैं उसके अंदर में आपको कहीं ना कहीं arteries या veins में आपको एक क्लॉट आपका फंस गया है. सो दिस इज समथिंग दैट एब्सोल्युटली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर इसका हम ध्यान नहीं देते तो कभी कभी जो एम्पुटेशन भी हमें करनी पड़ सकती है. सो अगेन इम्पोर्टेंट. फेंटिंग, बेहोश हो जाना इन द पोस्ट कोविड पीरियड, इस चीज का खास ध्यान रखें, बिकॉज कभी कभी लोग बेहोश हो जाते हैं, लगता है गर्मी है, धूप है, बट अगर अभी हाल में कोविड हुआ था एंड कोई बेहोश हुआ है, दिस पर्सन नीड्स टू बी इवेल्युएटेड प्रॉपरली फॉर एनी क्लॉट्स और एनी प्रॉब्लम्स that any other problems that they may be having. So this can be a neurological symptom, and this can be related to a clot also. So you need to speak to. So sometimes yes, I agree that heat stroke भी हो जाता है, उसके वजह से भी लोग गिर जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, and this may be one of the reasons. But yes, it needs to be evaluated properly. ब्लड इन द स्पूटम, सो ये एक शॉर्ट साइन है कि आपको निमोनिया हुआ है. निमोनिया हुआ है, बलगम के अंदर में अगर आपको खून आ रहे हैं, देन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी डेफिनेटली वरीड अबाउट. निमोनिया आपको हो गया है, यू नीड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. एंड आजकल to be very honest, we are not getting that many pneumonia patients. बहुत ज्यादा लोगों को निमोनिया नहीं हो रहा. In the last wave also we did not see too many pneumonia patients, but अगर ये आपको हो रहा है, remember that there are multiple variants in the community, and आपको ऐसा एक variant हो सकता है, पहले का कोई variant हो या फिर एक बाद का variant हो. अगर blood in the sputum है, you need to talk to your doctor immediately. You have pneumonia and you need to be treated for the same. मूविंग ऑन, सडन ऑनसेट कंफ्यूजन, अगर अचानक से कोई बहकी बहकी बातें करे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनको आज क्या डेट है ये नहीं पता, उनको अपने आसपास क्या हो रहा है उनको समझ नहीं आ रहा, एंड स्पेशली इन द एल्डरली पॉपुलेशन, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट साइन. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. कंफ्यूजन अगर हो रहा है अचानक से, sudden onset, I'm not talking about a patient who's very old and they are usually like that. Achanak se sudden onset confusion is another sign that a neurological complication of post covid, of the post covid period. So you need to be careful about this, and इसको immediately आप इसको अपने डॉक्टर को बताएं. या तो कोई क्लॉट हो सकती है, कुछ सोडियम imbalance हो सकता है, lot of things are there that can be the reason for this, and you need to speak to your doctor immediately. Not passing urine, of course, this is one of the important signs as well. You need to have a little अपना आपको urine जो है, urine output, you need to monitor this at least for 42 days, and you need to see if there is 18 to 24 hours, then you need to definitely speak to. And पानी पीने के बावजूद कि उसके बाद में भी कोई यूरिन पास नहीं कर रहा, this is a problem with the kidneys. That you might have gone into kidney failure, or there can be some multiple organs that are being affected because of your post-COVID sequelae, and this is something that you need to speak to your doctor again. सो ये जो हम अभी तक हमने जो बात कर रहे थे, ये सब क्लॉटिंग के बारे में कॉम्प्लिकेशंस थे. सो हाउ डू यू प्रिवेंट इट? बहुत ज्यादा देर तक आपको आइडल नहीं बैठना है, एक जगह नहीं बैठना है. आपको हर 1 घंटे में उठना है, 2-4 मिनट वॉक करिए, अपना खुद का काम जो है. इन द पोस्ट कोविड पीरियड आई ऑलवेज से दैट यू शुड do your own chores. खुद का पानी का ग्लास उठ के लेना. These things are definitely things that you need to do. Don't be a desk jockey. Get up and flex your legs every couple of hours. Just move about a bit, and this will ensure that आपको clotting की problems ना हो. Blood flow जो है पूरे शरीर में circulate होता रहे, and you will not be prone to these blood clots. इसके अलावा अगर आपका blood फ्लो की आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कैन हेल्प. बट दिस इज ये स्टेज आने के पहले ही हमें ध्यान रखना है. एंड इफ यू नीड एंटीकोएगुलेंट्स, यू माइट बी, सो दिस इज हाउ टू प्रिवेंट इट एंड ट्रीट इट एज वेल. अगर क्लॉटिंग हो गई है, देन कंप्रेशन स्टॉकिंग माइट बी वारंटेड.
and anticoagulants might be warranted. So clotting को हम कैसे detect करते हैं? D dimer हम करवाते हैं and D dimer high होता है, then we know that this is a sure shot sign that we need to get some anticoagulants into the picture. So these were the few things that we need to understand. So what we need to know is that COVID is a thrombogenic as well as an inflammatory disease. ये दोनों ही problems हमें आ सकती हैं. So clotting related सारी problem मैंने बता दी. Inflammation related to problem post COVID fibrosis जो है ये होती है. So in tomorrow and day after session I will talk about fibrosis and I will talk about cardiac problems in the post COVID period. ये दोनों important topics हम लेने जा रहे हैं, but I wanted all of you to be very well aware of the post COVID red flags, and I hope that this session was helpful to you. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another show. Until then. ये बहन अभी खड़ी होगी और सब